Good morning students. Welcome back to my new video. In today's class, we will do chapter 8, the tense. This video is part 2. In part 1, we have completed about simple present tense. Today we will learn about simple past tense and simple future tense. If you have not watched part 1 of this chapter, then first please go and watch part 1 of this chapter, the tense, and then come to part 2. Now let's begin our class. So first we will do a quick revision on what we have learned in our previous video. What is a tense? The tense of a verb indicates the time of the action or of the state of being that is expressed by the verb. It means टेंस वो रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है. इट मीन्स जो एक्शन या कोई इवेंट जो सेंटेंस में हो रहा है एंड वो किस टाइम पे हो रहा है वो हमें टेंस के थ्रू पता चलता है. टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दे आर बेस्ड ऑन टाइम. द फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस विच मीन्स वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, मीन्स आपका जो करंट है, जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं. द पास्ट टेंस विच मीन्स भूतकाल इन हिंदी. पास्ट टेंस होता है जो बीत चुका है, जो आपका पास्ट था. नाउ द फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल जो अभी आने वाला है. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, perfect tense, and the last is perfect continuous tense. So there are total 12 basic English tenses which you will learn in your class. Now here is simple present tense. Simple present tense indicates an action which happens in the present, but it isn't necessary for actions to happen right now. Simple present tense indicates unchanging situations, general truths, scientific facts, habits, fixed arrangements, and frequently occurring events. It means simple present tense indicate करते हैं वो एक्शन जो अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं, and it express an habit and repeated actions or event. That means जो repeated habits है, जो हमारी habits हैं, जो हम daily basis पे कर रहे हैं, एंड जो रिपीटेड एक्शन या इवेंट जो हम डेली बेस पे कर रहे हैं वो सारे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करते हैं. देन कम्स जनरल एंड यूनिवर्सल ट्रुथ. जनरल ट्रुथ जो हो रही है या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो हियर ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ ये कभी चेंज नहीं होने वाला है. सो वहाँ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डायरेक्शंस देते हैं, दैट टाइम ऑल्सो यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड फॉर फिक्स अरेंजमेंट मीन्स ऐसे अरेंजमेंट जो कि फिक्स है, जो चेंज नहीं होने वाले. जैसे अगर आपकी कल मीटिंग है या फिर अभी आपकी जो मीटिंग है ये एक फिक्स अरेंजमेंट है जो कि चेंज नहीं होने वाला है. सो इन दैट केस यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड द लास्ट इज फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट. ऐसे इवेंट जो हर बार हो रहे हैं, जैसे कि आपका एक रूटीन में भी शायद आपका एक ऐसा रूटीन हो कि आप हर सैटरडे या संडे मंदिर जाते हो, टेंपल पे जाते हो. ये आपका फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट है जो आप ये डेली बेस पे करते हो, हर सैटरडे को आप ये करते हो. ये आपका सिंपल प्रेजेंट में आएगा. नाउ here is structure of sentences in simple present tense. So in your book there are given total 4 points. You have to learn all these 4 points that will help you to form simple present tense sentences. Now students, moving to our current topic, that is simple past forms. The simple past form used the verb plus ed. In addition, there are many verbs with irregular past forms. Questions are made with did and negative forms are made with did not. It means simple past form में आप verb के साथ ed ऐड करते हैं, and अगर simple past फॉर्म में अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं, मीन्स एक सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन का, देन उसमें आप डिड ऐड करते हैं. एंड अगर कोई नेगेटिव फॉर्म में है देन उसमें आप डिड नॉट यूज़ करते हैं. स्टेटमेंट
You called Debbie. Question, did you call Debbie? Negative, you did not call Debbie. Okay, so now you can see here statement के फॉर्म में आपका है you called Debbie. So ये भी आपका सिंपल पास्ट फॉर्म में है. क्वेश्चन में आपने इसमें did ऐड किया. Did you call Debbie? नेगेटिव फॉर्म में आपने यहाँ पे did not call ऐड किया. You did not call Debbie. So now you can see here are few examples given. I wash my car in the morning. I wash my car in the morning. It means यहाँ क्या रिफ्लेक्ट करे, एक एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है. They saw a movie yesterday. So ये भी एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पास्ट में हो चुका है कि उसने कल मूवी देखी थी. She traveled to Japan last year. So here ये एक्सप्रेस कर रहा है एक टाइम, एक ड्यूरेशन टाइम का रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक टाइम पीरियड में जो कि पास्ट के बारे में है कि ये एक्शन कंप्लीट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया लास्ट ईयर. इट मीन्स ये लास्ट ईयर में ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है. सो हियर एक्सप्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट. नाउ द फोर्थ इज सौरभ brought a new car. So ये एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है. लास्ट इज नेहा broke a glass by mistake. So ये भी एक्शन एक कंप्लीट हो चुका है जो कि पास्ट में हुआ था. The verbs used in the above sentences are in the simple past tense. So यहाँ पे जो वर्ब यूज हुए हैं सब सिंपल पास्ट टेंस में हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए washed. वॉश में क्या ऐड है, ईडी. सिंपल पास्ट टेंस में हम ईडी ऐड करते हैं. सॉ भी आपका पास्ट है, बिकॉज अगर सी होता है तो ये प्रेजेंट होता है, ये सॉ है. ट्रेवल्ड, ईडी, पास्ट. ब्रॉट, ब्रोक. सो दीज ऑल आर पास्ट टेंस. नाउ हियर आर यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. आप सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस एक्शंस completed in the past. ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गए, मीन्स ऐसे इवेंट या एक्शंस मीन्स जो आप काम कर रहे हैं जो पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. एग्जाम्पल, मेघा रिसीव अ लेटर yesterday. सो मेघा क्या है, यहाँ आपकी एक सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है आपका, रिसीव्ड. सो उसने एक लेटर रिसीव किया yesterday को ही. सो ये पास्ट में जो था एक्शन जो हो चुका है. She almost drowned in the sea. Here क्या है कि वो समुद्र में डूबने ही वाली थी. सो ये क्या था, ये आपका पास्ट के बारे में बात हो रही, बिकॉज यहाँ ईडी है. My mother got me a present. सो यहाँ मदर ने प्रेजेंट लाइक गॉट, मीन्स पास्ट के बारे में बात हो रही कि हाँ मेरी मदर मेरे लिए गिफ्ट लाई थी. They visited us yesterday. So again this is past. So all these verbs like receive, drawn, got, visited, these all actions are your verb. Now moving to second, to express a series of completed actions. ऐसे एक्शन जो एक सीरीज में कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, रिशा arrived at the airport at 6, checked into the hotel at 7 and went for dinner at 8. So यहाँ पे एक एक्शंस हो रहे हैं जो कि बहुत लंबे सीरीज में हो रहे हैं एंड फुल्ली जो एक्शंस हो रहे हैं वो फुल्ली कंप्लीट है. जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस आपका बता रहा है कि रिशा अराइव एट एयरपोर्ट एट 6. सो वो अराइव की, वो एयरपोर्ट पे पहुँची 6 पे. देन उन्होंने होटल गई, चेक इनटू द होटल एट 7 o'clock पे वो चली गई होटल. एंड शी वेंट फॉर डिनर एट 8 एंड वो डिनर करने के लिए 8 o'clock पे गई. सो ये पूरे एक एक्शंस है जो पास्ट में आपके कंप्लीट हो गए हैं एंड एक सीरीज बन गई है एक्शंस की. ओके, सो दे आर कॉल्ड टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस. यहाँ जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो फुल्ली कंप्लीट हो रहे हैं एंड सारे एक्शंस एक सीरीज में हो रहे हैं, मीन्स लगातार होते जा रहे हैं. ओके, नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, आई फिनिश्ड वर्क.
walked to the beach and found a nice place to relax. So you can see here I finished work. मैंने अपना काम complete किया. Walk to the beach. Then मैं beach पे walk करने के लिए गया and found a nice place to relax. एंड मुझे एक प्लेस मिली बहुत अच्छे से रिलैक्स करने के लिए. सो ये एक कंप्लीटेड एक्शन है जो कि आपका पास्ट में कंप्लीट हुआ है एंड ये एक्सप्रेस कर रहा है कि एक सीरीज है ऑफ कंप्लीटेड एक्शन. मीन्स नाउ दिस सेंटेंस मेक्स अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन. एक सीरीज बनाई जा रही है कंप्लीटेड एक्शंस की. नाउ सी द थर्ड पॉइंट. टू एक्सप्रेस अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट द एक्शन बिगिंस एंड एंड्स इन द पास्ट. यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाए कि इस टाइम पीरियड के लिए जो एक्शंस है वो कंप्लीट हो गया है पास्ट में. एग्जाम्पल, दे लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years. मीन्स यहाँ बताया जाए कि वे 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं. सो ये एक ड्यूरेशन बता रहा है. यहाँ क्या लिखा है 2 years. सो यहाँ एक ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम पीरियड का बता रहा है कि इतने टाइम तक वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थे. Now, see the second point. We talk on the phone for 30 minutes. हम लोग बात किए फ़ोन पे about 30 minutes. So एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है कि इतने टाइम तक हमने पास्ट में बात किया था. I spent my childhood at Dehradun. She waited for 1 hour. Now, students, see the fourth point. To express habits in the past. ऐसे हैबिट्स जो हम पास्ट में बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आई स्टडीड जर्मन व्हेन आई वॉज चाइल्ड. मैं स्टडी करता था जर्मन जब मैं चाइल्ड था, जब मैं छोटा था देन मैं स्टडी करता था जर्मन. सो ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है, एक हैबिट के बारे में बात की जा रही है जो आपका कंप्लीट हो चुका है एंड ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर कॉलेज. हितेश usually went home on Saturdays. He did not play the piano. So यह सारी एक्सप्रेस कर रही है आपकी हैबिट जो कि आपके पास्ट में हो रहा है. एंड पास्ट में आप वर्ब के साथ हमेशा ईडी ऐड करते हैं, जैसे इस सेंटेंस में भी ऐड है स्टडीड, वर्कड, वेंट, डू नॉट प्ले. ओके, नाउ यू कैन सी now here is structure of sentences in simple past tense. so यहाँ पे कुछ structures दिए गए हैं sentences के कि हम कैसे sentences बनाएंगे simple past tense में. so the first point is subject plus second form of the verb plus object. so this is very important point कि हम जब simple past tense में अपने verb को form करते हैं then verb में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते थे. जैसे कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे वर्ब का. मीन्स फर्स्ट फॉर्म होता है रूट फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो वर्ब का होता है वो आप यूज़ करते थे. बट इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस यू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप बनाते हो ईडी ऐड करके वर्ब के साथ. फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस नाउ यू विल सी सेंटेंसेस जो पॉजिटिव हों उनके साथ हम क्या करते हैं ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सेंटेंस. इट मीन्स पहले आप अपने वर्ब सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, सब्जेक्ट के साथ आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होता है. एंड सेकेंड फॉर्म वर्ब बनाने के लिए आप वर्ब के साथ ईडी ऐड करते हो. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई वॉक टू द स्कूल येस्टरडे. सो हियर वॉक आपका एक्शन है, एक वर्ब है एंड वर्ब को हमको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में बनाना है. देन हम यहाँ पे ईडी ऐड करेंगे, देन ये बन जाएगा आई वॉक्ड. आई वॉक टू स्कूल येस्टरडे. सेकेंड, शी वॉक टू स्कूल येस्टरडे. ही वॉक टू स्कूल येस्टरडे. दे वॉक टू स्कूल येस्टरडे. द किड्स वॉक टू द स्कूल येस्टरडे. तनाया वॉक टू स्कूल येस्टरडे. वी वॉक टू स्कूल येस्टरडे. You walked to school yesterday. So here all subjects are like I, she, he, they, the kids, Tanaya, we, you. So here all subjects will be there, whether it is singular or plural. All subjects are included in this plus second form of the verb plus object.
नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, जब सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव फॉर्म में हमें बनाना है, इन दैट केस यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यहाँ रूट फॉर्म यूज करेंगे। रूट फॉर्म मीन्स द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ आप सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं देन वर्ब वहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, दैट मीन्स रूट फॉर्म। नाउ सी द सेंटेंस, शी डिड नॉट पोर द मिल्क। सो यहाँ सब्जेक्ट आपका शी है, डिड नॉट आप इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने या स्टेटमेंट बनाने हैं, देन यू विल यूज डिड नॉट। देन पोर, पोर आपका एक वर्ब हुआ, रूट फॉर्म में है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंटेंस। सो द सेंटेंस विल बिकम शी डिड नॉट पोर द मिल्क। They did not worry about the kids. I did not play yesterday. We did not perform in the play. The moon did not shine brightly. You did not do your homework. Now coming to for interrogative sentences, ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो। इंट्रोगेटिव मीन्स द सेंटेंसेस और स्टेटमेंट दैट आस्क अ क्वेश्चंस। In that case, you will use did plus subject plus root form of the verb. So the sentence form here are, did she complete her work? Did Rohan sing well? Did you attend the music festival? Did they eat well? Did we forget something? Did the cat catch the rat? So यहाँ इन सारे sentences में you have used did plus subject. Subjects are you, she, Rohan, you, they, we, the. So subjects आपके सारे ये हैं। Root form of the verb are complete, sing, attend, eat, forget, catch. So ये आपके सारे verbs हैं जो verbs आपके doing actions होते हैं या doing events होते हैं। इनके साथ आप ed या s नहीं ऐड करेंगे बिकॉज ये root form में है। root form means the basic form of the verb. Now here is one point given, questions beginning with question words. ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि what, when, why, where, how. सो ये सब क्या है आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। सो ऐसे सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी, इन दैट केस फर्स्ट द क्वेश्चन वर्ड विल कम, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द verb. Example, what did the students carry with them? So here you have added what is your question word, did you will add plus the student is your subject here, carry is your verb plus with them. Second, when did you come back home? Why did she not complete her work? Now students, moving to सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग दोज एक्शन दैट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर। इन अदर वर्ड्स, वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो एक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं जो अभी फ्यूचर में होने वाला है। आपको पता नहीं है कि वो फ्यूचर में होगा ही, बट आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। सो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। एग्जाम्पल्स आर, इट विल रेन टुमारो, ऐसा हो सकता है कि कल बारिश हो। सो ये आपका एक प्रिडिक्शन है, आप श्योर नहीं है, ऐसा हो सकता है बस। सेकेंड, आई विल कैरी योर बैग फॉर यू। थर्ड, शैल आई ओपन द विंडो। फोर्थ, द प्रिंसिपल विल वेलकम द चीफ गेस्ट। दे विल नॉट सी यू। So these all sentences are in a form of simple future tense. The verbs used in the above sentences are in simple future tense. So यहाँ जो verbs use हुए हैं sentences में वो simple future tense में, जैसे कि verb है आपका rain, carry, open, welcome. So these all are your verb. Now students, coming to structure of sentences in simple future tense. फ्यूचर टेंस में आप कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं? फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट यू विल डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब
और shall plus root form of the verb. It means subject के साथ आप will use करेंगे या shall use करेंगे. Then root form means the basic form of the verb you will use. Example, Alice will help us in decorating the house. Don't lift that, you will hurt yourself. She will write the letter after an hour. They will come to school tomorrow. We will buy that television. Now the second point is for negative sentences. Negative sentences आप कैसे फॉर्म करेंगे? इस केस में आपको सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड नॉट या नॉट यूज़ करते हैं, देन नॉट आप यहाँ यूज़ करेंगे. सेंटेंसेस, रेशम विल नॉट वेयर दैट ड्रेस. सो हियर द सब्जेक्ट इज रेशम. विल you will use, then will plus not plus root form of the verb which is wear that dress. Second is they will not travel much. Third, I will not go back home. She shall consult the doctor. The police will catch the thief. Now for interrogative sentences. ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट पहले आपका यूज़ नहीं होगा, पहले will या shall ऐड होगा, देन आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सेंटेंस पूरा. एग्जाम्पल, will you burn the CD for me? Shall I make dinner for you? Will Mohan drive the car? Will they say the prayers? Will she lock the doors? So now there is one point given, questions beginning with question words. ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि when, why, what, where, how. सो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनके साथ पहले आप क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे, देन प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द verb. So the sentences formed here are, when will he give you an answer? Why will you not go to the party? What will they do today? Where will she stop? So here in this last point you will add question word plus will or shall plus subject plus root form of the verb. Now here is one going to. Going to आप कैसे ऐड करते हैं सेंटेंसेस में? सेंटेंसेस यहाँ फॉर्म है, My grandmother is going to be 79 next year. So मेरी grandmother next year 79 की हो जाएंगी. देन ये एक फ्यूचर इवेंट के बारे में बताया जाए कि नेक्स्ट ईयर में ऐसा होगा. We are going to leave for Assam next Saturday. सो गोइंग के साथ आप टू हमेशा यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. द प्लेन इज गोइंग टू लैंड एट 5:30 AM. आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस टुडे. शी हैज़ लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड. ही इज गोइंग टू विन द रेस. So here you have seen how to use going to in formation of simple future tense. Now students, coming to page number 51, in this there is given forms of verbs. So how you can form verbs? In different tenses we use different form of verbs. Here are the three major forms of some important verbs. It means जब आप different tenses बनाते हैं, it can be present, past or future tense. That time we use different form of the verb. It means जब हम टेंसेस बनाते हैं देन हम डिफरेंट फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं, जो कि हमने आज पढ़ा इन मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. सो देयर यू यूज़ different form of the verb. So here are few important verbs and their forms are given. These whole chart you have to learn. Just go through all these chart, then it will help you to do all the exercises which are given in the back of the chapter. So now students, we have completed this chapter. Your homework for today is to do exercise 1
which is given on page number 55, exercise 2 and exercise 3. So it is given on page number 55 and 56. All of you please do your homework, and here is one chart given. You can see the picture is displaying on a screen that simple present tense, simple past tense and simple future tense. So यहाँ पे verb दिए गए हैं कि आप verb कैसे यूज़ करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म द verb. इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं verb का. इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द verb. सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं verb के. देन इन सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज़ विल प्लस फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb. इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं verb के प्लस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. So this is important chart which you have to keep this chart in your mind. You can also write this in your fair grammar copy. So there are some examples given. Example in simple present tense, I am a teacher, he is a teacher, they are teachers, he teaches English, they teach English. So now you can see here in the fourth last you can see he teaches English. सो ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है. ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं आप, वो आपका फर्स्ट फॉर्म में तो है बट उसके साथ आप एस भी ऐड करते हैं. एंड इन केस ऑफ प्लूरल, जैसे कि लास्ट सेंटेंस है दे टीच इंग्लिश. सो दे क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आप यूज़ करेंगे उनके साथ आप एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं. सो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा, इन दैट केस यू विल यूज वर्ब बाय एडिंग एस, एंड इन केस ऑफ प्लूरल यू विल नॉट यूज एस इन मेकिंग वर्ब. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. नाउ कमिंग टू सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल, आई वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, दे वर टीचर्स, ही थॉट इंग्लिश, they taught English. Now next example in simple future tense, I will be a teacher, he will be a teacher, they will be teachers, he will teach English, they will teach English. So now students, we have completed our chapter 8. Your homework is to do exercise 1, exercise 2 and exercise 3. All of you please do your homework, and if you feel any doubt regarding any tenses you can ask me in a comment section below the video, and please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Now I will end my class. All of you please be safe and stay at your home. Thank you class.